नमस्कार आपण मानक समस्त को यही वीडियो बहुत बहुत स्वागत। आज यही वीडियो में आपण सहित +3 फर्स्ट इयर सेकेंड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर पेपर 4 यूनिट 4 रो द चेंजिंग नेचर ऑफ द इंडिया स्टेट रो किछि 2 मास क्वेश्चन आपन सो शेयर करबी। मु पूर्व मध्य यूनिट 1 2 3 ऑलरेडी वीडियो बन साची। जदि आपन देखि नांती ताले चैनल को जे देखि परबी आ एही वीडियो रे म कहबी जे आपन हर पीडीएफ को मध्य कि भाबे पाई परबी। तो चल तो स्टार्ट करबा। राइट द डेस्टिनेशन बिटवीन सिविल एंड पॉलिटिकल सोसाइटी। सिविल और पॉलिटिकल सोसाइटी डेस्टिनेशन मान प्रति पार्थक्य कोन अछि ना सिविल सोसाइटी अकॉर्डिंग टू चैटर्जी कंसिस्ट मान गठन इज लार्जली अर्बन मिडिल क्लासेस एंड इट्स स्पेयर ऑफ द सीक्स टू कॉन्ग्रुएंट मान अनुकूल विथ द नॉर्मेटिव मॉडल्स ऑफ बोर्जेस सिविल सोसाइटी। देखिले आम सिविल सोसाइटी मैंने कौन ना चैटर्जी अनुसार जो कनसेप्ट कर लार्ज अर्बन मिडिल क्लास लोक रोचे एंड इट इज स्पेयर ऑफ द सीक टू द कॉन्ग्रुएंट मान अनुकूल सहित विथ द नॉर्मेटिव मॉडल्स ऑफ बोर्जेस सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटिंग द डोमेन ऑफ द कैपिटलिस्ट हेगेमनी। On the other hand, political society includes huge numbers of urban, poor and rural population. तो ये कौन destination between civil and political society. Next है क्या what is GDP? GDP मैंने कौन GDP is an aggregate measure of production. This कौन aggregate measure of production मैंने कौन समस्त जो उत्पादन है जो प्रोडक्शन है तार समस्त मात्र जो रही है GDP कहुए। This equal to the sum of the gross values added of the all domestic institutional units engaged in production. Any tax कौन आउ कौन देखिए production means subsides on production and not include the value of their outputs. GDP is used to calculate the economic परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री। और जीडीपी कौन व्यवहार आम कौन जीडीपी को आम जो काउंट गोटे देशर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कितना अच्छी ताको आम कौन कैलकुलेट करथांती। तो जीडीपी को व्यवहार कर। नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज आईएमएफ। आईएमएफ माने कौन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गोटे कौन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का संगठन एंड इट हैज हिज हेडक्वार्टर्स एट वाशिंगटन डीसी यूएसए आर हेडक्वार्टर अच्छी। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज इंस्टीट्यूट 1944 जो संगठनटा इंस्टीट्यूट होता ए पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग और बेटर वुड्स कॉन्फ्रेंस। इट वर्क्स फॉर फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फैसिलिटी इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड। व्हाट इज सिंबलाइजेस द वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट को सिंबलाइज मैंने कौन बुझे वेलफेयर स्टेट जन्म राष्ट्र कला कौन बुझे द वेलफेयर स्टेट सिंबलाइजेस सिस्टम इन विच द स्टेट गवर्नमेंट टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेवलपिंग द सोसाइटी सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट द measures of undertaken towards this end can include pensions, social security schemes, free subordinate health care, education, etc. The welfare state can be traced back to 1940 in the England में 1940 मसीह को ट्रेस कराइथिले welfare state को। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द नोट। राइट शॉर्ट नोट ऑन MGNREA। द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट was introduced in 2005 2005 मसीह को इंट्रोड्यूस कराइथिला। लेटर दिस वाज रीनेम्ड और जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो कौन पुनथरे रिमेन मैंने पुनथर ना चेंज कराला। एम टू इंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी टू रूरल एरिया बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 days of wage employment in financial aid to every household whose adult members of household the unskilled manual work। तो जो मैंने कि अनस्किल मैंने जो लेबर था से 100 दिन किसी वर्क मिल मैंने से कौन ना सिक्योरिटी एरिया सुरक्षा मत जो जीवन को। तो ये गोटे कौन ना महात्मा फास्ट थिला नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ताकू पुणी 2005 को इंट्रोड्यूस कराइला। पुणी से कौन कर पर से चेंज कराला ताकू नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बदल महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बोधे चेंज करागला। What is the notion of governmentality? The notion of governmentality replaces the notion of good governance. This implies the style or act of governing by the treating the people not as a citizen but as a group of population. Governments are in the business of managing population. This conceptualization comes from the Foucault's. Governments, in order to sustain themselves, have historically been engaged in providing some sort of welfare function. Governmentality comes to common parts of the
while with the colonial experience itself. तो ये कौन गोटे गभर्नमेंट को मेंटालिटी करेगा हम देखिले नेक्स्ट देखिबा how do we need to understand social movement. तब social movements को हम understand में बुझी पारिबा कि भाई ना social movements need to be understood as social and political formalization of graded toward changes. These movements usually use direct action tactics and to prescribe the state and government to bring out about change in policy then the structure is changed. The example never would come in India. Social movements such as the civil rights movements can be traced by the 1970. तो अंडरस्टैंडिंग सोशल मूवमेंट सामाजिक आंदोलन मूवमेंट कौन ना यहाँ दरकार कौन पड़े ना जिते अंडरस्टूड आम सोशल पॉलिटिकल फॉर्मेशन क्रिएटेड द टुवर्ड्स चेंज जो सामाजिक चेंज यहाँ दरकार पड़े. दिज मूवमेंट्स यूजुअली यूज टू डायरेक्ट एक्शन tactics to pressure the state and government bring out about the change the policy. अब यहाँ कौन ना किसी गवर्नमेंट को चेंज पॉलिसी को या सोशल मूवमेंट होता है. आ कौन ना एग्जांपल नेबा इन इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज में मूवमेंट सच सिविल राइट्स मूवमेंट कैन बी ट्रेस बैक 1970 या कौन ट्रेस होता. व्हाट इज मिलिटाराइजेशन इन प्ले. मिलिटाराइजेशन इन प्ले माने कौन ना सैन्य गोड़करण जो तार अर्थ आम कौन कहले बुझिपारे ना मिलिटाराइजेशन इम्प्लाइज टू disproportionate increase in the state expenditure on military. It also refers to use military force to solve internal conflicts and use of military force over civilian population or control to civilian population which has been also problematic. Write the viewpoint of defenders and critics about the globalization. Globalization is often described by its defenders as beneficial, generating fresh economic opportunity and cultural diversity. However, critics often describe it as a subjugation of human by the capital, where there is a domination of a wealthier, overdeveloped nation over the poor, underdeveloped countries. It is believed that this has led to the rise of a gap between the haves and haves not. Next here. Who first introduced the concept of globalization and what is meaning? First globalization concept को first introduce की करते आ तार meaning कौन थिला. The concept of globalization was first introduced by Adam Smith. को introduce करले the father of modern economics in the year 1776. Third, the book title Wealth of the Nations. Thus, globalization is not simply an economic phenomenon, is a larger interplay of social, political and cultural factors of the state. तो ये सब सोसाइटी जो मैंने गोटे सोसाइटी स्टेट सब जो फैक्टर्स अच्छी तार समस्त सब इंटरप्ले मैंने परस्पर सहित कौन से लिंक गोटे घटना लिंक करछि. What is the process of globalization? Globalization प्रक्रिया कौन. Globalization is not simply limited to integration of national and international economics but also encompasses cultural social exchange with it. It is the cross-border transaction of goods and services with the international capital flow and diffusion of the technology, which leads to interconnectedness. Next question. What is global economy? Global economy means what? The global economy is characterized by ever increasing economic interdependence among the countries of the world, in which there is multiplicity of linkage, interconnections and interdependence. Advocates of globalization are of the opinion that the parameters of globalization include unhindered flow, trade, capital and technology. It's like global economy. What is trade liberalization? As a part of neoliberal reforms policies were introduced to heighten competition in domestic market. One such policy prepared to the liberalization of the important trade. An effort was made to difficult import controls by rapidly reducing the number of trafficked items subject to quantitative restrictions, licensing and other forms of disciplinary controls on the imports. What is passive revolution according to Chatterjee? तो Chatterjee से कौन passive revolution माने कौन? Chatterjee has argued that the role played by the Indian state towards furthering the growth of capitalism can be understood within the framework of passive revolution. From a affair where the bourgeois are not strong enough to bring but capitalist transformation and hence the state intervenes towards furthering the capitalism. What is planning? Planning is a form of determining the state policy
determining state policy or the coherent set of state policies as a way to constant ideas, planning looking into a particular development aspect in a larger context to advance the theoretical approach. Thus, planning with a focus on development emerged as an important determinant of priorities, reflection of the notion within the political arena. Political arena वाला बुझा पॉलिटिकल राजनीति गोटे आखड़ा गोटे बुझा नेक्स्ट देखिए राइट द genesis of neoliberal reforms. The genesis of neoliberal reforms is traced back to the development emphasis of the late 1960s to 1970s in India. This was a period of when economic growth slowed concentrated by other compared to growth record during the first 15 years after the Indian independence. Next, what were the steps witnessed during the open policies in 1980s open policy the open policies in 1980s witnessed the major steps which altered the political economy of Indian state like deregulation of industries, decontrol of prices, liberalization of import tax productions, reducing the welfare and social spending and increasing the defect spending. What is the concept of a welfare state? Welfare state concept means the establishment of a welfare state is democratic countries was a remarkable development of the 20th century. In a welfare state, the role of a function of government are extensive and diversified. A welfare state takes responsibility of the welfare and the economic and social well-being of its citizens. Welfare state गोटे दायित्व कौन था ना जनमंगल राष्ट्र किपर निर्माण करियो आ इकोनॉमिक गोटे आर्थिक भाव आ कोन सोशल भाव से वेलबिंग ऑफ सिटीजन मन पई मंगल रे काम किपर कर परबो से गोटे मते वेलफेयर स्टेट रो दायित्व किछ थाउची नेक्स्ट देखिबा what are the four ways that the Indian state has responded to the human rights struggle according to Monranjan Mohanty. Mohanty has argued that the Indian state has responded to the human rights struggles in four ways. तो चारोटी रास्ता कौन रही जो फोर broad ways कौन there are ideological, institutional, fundamentations माने कौन विखंडन तो बुझिबा of issues through use of responsion. Next देखिबा how can poverty reduction programs intended by the Indian state after 1991 be classified into 5 categories according to Yesudian. So Yesudian has argued that poverty reduction programs intended by the Indian state after 1991 can be classified into 5 categories. 5 categories रही कौन सेल्फ इम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स रही वेग इम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स मान लोक मान जो इम्प्लॉयमेंट कार्य मिल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स खाद्य सुरक्षा प्रोग्राम्स सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स सामाजिक सुरक्षा प्रदान अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स ये 5टी प्रोग्राम रही जो कौन ना भाव व्यक्त होती कौटा ना जो आम रही जो पॉवर्टी रिड्यूशन प्रोग्रामटा 5टी कैटेगरी भाव डिवाइड होती कहार एटा माने उक्ति अकॉर्डिंग टू कार ना अकॉर्डिंग टू यशुदियान को हिसाब से राइट द discontinuities between the post-colonial Indian state and its procedures. The discontinuities between the post-colonial Indian state and its procedures are implementations of a democratic mode of functioning based on universal order franchise, adoption of constitutionally guaranteed fundamental rights, formulation of an independent and strongly judiciary, separation of powers between legislature, executive and judiciary, adoption of principles of federalism for relation between the center and state. तो इतला कौन जो सब जो रही कौन कौन discontinuous between the post-colonial Indian state and the precedents मैंने पूर्वजों हिसाब से तो ये यूनिट 4 किसी 2 मार्क्स क्वेश्चन जब आप पीडीएफ चाहते डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अच्छी से जॉइन हूँ आप पीडीएफ मिल जाए तो थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो।